Hello and welcome. The topic is speed versus velocity. So we are going to differentiate between both of them, that what is the real difference between the speed and the velocity. So that is the window, and in window we have a person, that is Mustaqim, and Mustaqim is enjoying the winter break in the window, and he is drinking a very good cup of coffee. तो हम मुस्तकीम को इन्वॉल्व करेंगे स्पीड और वेलोसिटी को समझने में. स्पीड, ये लफ्ज बार बार सुनने को मिलता है, बार बार यू आर एक्सप्रेसिंग इट दैट द बॉलर इज बॉलिंग एट अ वेरी लो स्पीड. हसन अली की स्पीड बहुत कम हो गई, शाहिन अफरीदी की स्पीड बहुत कम हो गई. और यू से दैट टोयोटा सुप्रा कैन गो एट वेरी हाई स्पीड, or any other car, the speed of that car is very very fast. Or you see anything and say if it is going very fast or if it is going very slow, so you express that it is going very fast, it is very speedy. इसका एक्सीडेंट हो सकता है आगे जाके. तो ये लफ्ज हम बार बार सुनते रहते हैं. स्पीड का लफ्ज बड़ा कॉमन है, बट स्पीड होती क्या? If you are very fast and going from one point to another point, so you can travel this distance in a lesser time. And if you are very slow, the traffic is very slow. We are living in the Karachi. There is some thing that happens on the road. Some working is happening on the road, or there is a rain on the road. So you will take a greater time to travel this distance. So your speed is slow because of the rush that have taken you. So basically, speed क्या होती है? Speed होती है how much distance we have traveled in any time interval. So it is basically the rate of distance. When we talk rate, distance traveled per unit time. कितना distance travel करा with respect to time. और average speed, so we can say total distance divided by time. So that is the formula of speed we are seeing. Speed is equal to total distance upon time. So now we are just expressing the speed. Just remember, we are just expressing the speed. Let's say मुस्तकीम साहब यहाँ खड़े हुए थे, वो सामने से देखते हैं कि एक बाइक बड़ी तेजी से जा रही है और आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है. तो मुस्तकीम बोलेंगे कि ये बाइक बड़ी तेजी से जा रही थी और इसकी स्पीड बहुत तेज थी, इसकी स्पीड बहुत तेज थी, इस वजह से इसका एक्सीडेंट हो गया. नाउ मुस्तकीम को आधे घंटे पहले इसके दोस्त अबरार का फोन आया है और अबरार ने इसे बताया है कि वो किस लोकेशन पे जा रहा है, और उसने मुस्तकीम को बोला है कि भाई मैं तुम्हारे घर के आगे से गुजरूंगा, मैं जा रहा हूँ नॉर्थ वॉक, मैं जा रहा हूँ लकी वन मॉल, जो भी आपकी दोस्त की फेवरेट लोकेशन है आप उसको यहाँ फिट कर सकते हैं एग्जाम्पल. तो मुस्तकीम थोड़ी देर बाद अबरार को देखता है और अबरार की गाड़ी भी बड़ी तेजी से जा रही है, बड़ी स्पीडी है, और मुस्तकीम को अब ये भी पता है कि वो कहाँ जा रहा है. तो मुस्तकीम जो है अपने एक तीसरे दोस्त इकबाल को बताता है कि वो देखो वो देखो वो देखो, उसके साथ ही खड़ा हुआ इकबाल बराबर वाली खिड़की में, कि अबरार जा रहा है नॉर्थ वॉक, और ये नॉर्थ वॉक जा रहा है और उसकी स्पीड बहुत तेज है, इसकी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज है, इसे बड़ी जल्दी है नॉर्थ वॉक जाने की. तो पहली एग्जाम्पल में वो बाइक की सिर्फ स्पीड बता रहा था, लेकिन दूसरी एग्जाम्पल में मुस्तकीम जब एक्सप्रेस कर रहा है तो वो ये भी बता रहा है हाउ फास्ट और हाउ स्लो इट इज, और वो ये भी बता रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, यानी कि उसको उसकी डायरेक्शन भी पता है. So that is the difference between the speed and velocity. ये velocity दोनों चीजों को describe कर रही होती है. It is describing the speed with which that body is going, and it is also describing कि वो किस direction में जा रही है, कहाँ जा रही है, left, right, top, bottom, in any specific direction where it is going. So that is the difference between the speed and the velocity. तो जब हमारे पास पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाती है तो स्पीड में कितनी स्पीड ट्रेवल करी और डायरेक्शन आ गई, तो हम वहां पे ले आते हैं डिस्प्लेसमेंट को. तो व्हाट इज वेलोसिटी?
velocity is rate of displacement. What is the formula of velocity? Displacement upon time. तो स्पीड के अंदर हम वी आर जस्ट एक्सप्रेसिंग द स्पीड, दैट्स व्हाई it is a scalar quantity. We are not expressing in which direction that body is going. But velocity, we are just expressing the speed with the direction. किस डायरेक्शन में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. फॉर्मूला, I am just differentiating between two, that d is distance here and s is displacement here. But elsewhere you can use as s upon t. If it is in a particular direction, that becomes displacement, and if it is not, then that becomes distance. So formula v is equal to s upon t हम लोग use कर रहे होंगे. Displacement upon time for velocity and distance upon time for speed. The symbol is same. If you find the unit of distance is meter, the unit of time is second, so the unit will come meter per second, meter second inverse, and that is similar for both of them. अच्छा, अब ये बात इस चीज को डिस्क्राइब कर देती है कि वेलोसिटी दो चीजें डिस्क्राइब करती है बॉडी की, स्पीड और उसके साथ साथ किस डायरेक्शन में वो जा रही है. और मैं आखिरी लाइन बोल के इस वीडियो को सम अप करूंगा, दैट वेलोसिटी is just speed in a particular direction. So that is what velocity is, and that is the only thing, that direction thing, that vector quantity that differentiates between the speed and velocity. And it is very important to involve direction. हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही पहुंचना होता है हर वक्त. जब हम जा रहे होते हैं एक जगह से निकल रहे होते हैं, हमारी कोई ना कोई डेस्टिनेशन होती है लाजमी. तो उस डेस्टिनेशन को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी, और डायरेक्शन जब डिफाइन करोगे स्पीड के साथ तो वो वेलोसिटी हो जाएगी. So here I end my lecture, speed versus velocity.